Hello guys, it's still morning. Acha, very less people are here. First, a very introductory question. Again, I asked this in normal groups. I asked this in groups. Do you guys have any idea about what blockchain is? Anyone? Anything? Anything? Go ahead. Mhm. Yeah. Okay. Uh, Anyone else? I'm asking this because I need to know where your guys' understanding are, and I will teach you guys in that way. So feel free to say anything. Anything, any buzzwords you have heard in the internet, Twitter, anything. Data stored in front from a blocks. Yep, is decentralized. Okay, immutable. Yep. Acha. Another question. What was your motivation to come to the class? Like, I know, understand that blockchain is not a very common track, but you guys still came to the class. What was your motivation for it? Saturday class. Fine, same. Acha, that is valid. That is also valid. I support it. Anyone? What was your motivation to come to the class? Either to know it or just want to. Yeah. Go ahead. Acha. Okay. Okay. Yeah. Very valid. Okay. Let's start it. Uh, this is our GDG blockchain domain. I am there as the lead and Adarsh is there as the lead. Sadly, his profile picture is not there, but he's there behind, and Piush is also there. Recording on there. Yeah. Okay. Raise your hand if you use UPI. Good. What do you understand by using UPI? What do you understand by using a UPI? You trust a digital database that has your bank addresses and accounts, right? I mean, uh, it is true that your bank accounts, your UPI pin, and everything is in a cloud, right? It is true. So you're trusting that first. Second, I mean, you guys mostly play games, and yeah, of course, I don't want to be sexist, but I have also seen women play games. Have you bought anything, any skin in a game? Any kind of subscription will also. So you understand what digital assets are. Subscription is not a digital asset. I won't say it's a digital asset. That's why yeah. Cosmetics is also it's a. Acha, yeah. Acha, acha. So you understand digital assets. Second, do you think crypto is a scam? Okay, guys, nobody thinks it. क्यों भागना? अच्छा, ठीक है. Okay, there's a very interactive way to do it. Uh, I know you have heard many things in the market. I want you guys to say whether what you're seeing in the screen is actually true or not. First thing, you have heard about Bitcoin, right? Is blockchain Bitcoin they're the same thing? And if not, why? Anyone else? Ah, it's an asset. Yeah. So basically, the thing is, blockchain is kind of an operating system. Bitcoin is just like an one app on the OS. ठीक है? That is the analogy I have used to make you understand. So
Uh, okay, everybody knows this. This is a very false thing. Let's go to next. One thing, I need money to start in blockchain. Do you think you need investment of money to start in blockchain? You don't think so. Why is that? I'm just telling that I want to. I'm not talking about trading in blockchain. Buying means trading. I want to be like uh, nowadays blockchain is basically smart contracts and everything, right? What is a smart contract? It's a program. So we can like blockchain has different kinds of nets. There is mainnet, there is testnet, there is devnet. For testnets and devnets, we can actually write our own code, write our own blockchain program, and actually host it. So we don't need money for this. So absolutely there is no barrier of entry if you want to build blockchain. Blockchain destroys environmental melt polar bears. This used to be true when there was Bitcoin. This is a very outdated kind of idea. I will explain it how it happened. Is blockchain a slow cloud database? Anyone? Not slow but a cloud database. Huh? Is it a slow cloud database? It's not a Acha. But it is actually a slow cloud database. It is slower than normal database. Like any database you are hosted in the cloud, it is slower than that. It has something different. I'll explain it to you. You heard about NFTs, right? NFTs are expensive JPEGs. I can right click to save them. Is it true or false? Anyway, is it true or false? It's false, right? Why? You can't access it, right? Absolutely. That's true. You can't save it. Again, that's what she has said. If I make a mistake on blockchain, I can't delete my Android. It's immutable. Blockchain is unhackable and 100% secure. Not sure. Anyone else? Fact. It's very hard to hack. It is not hard to hack. It is unhackable. I'll say that there is two kind of different options. Like what happened with Bitcoin is different from what happened with Ethereum. I'll say how it happened. Blockchain is just for finance. It has no real world use case. It's false, right? It has real world use case. What might that be? Anyone have an idea? Like you say all the factors of blockchain. It's decentralized. It's immutable. It provides ownership of assets owned. Like let's take these three options and think about outside finance. What kind of use cases you might have? Okay, I'll just not push. It's a very introductory class. I don't want to push it. Okay. Anyways, let's start into me educating you first. So, blockchain's first use case was finance, right? Let's start with the evolution of value. What first happened as a method of transaction was barter system, right? There was like trading goods directly. Then came gold, physical store of value. Gold transformed to coins and paper to have a standardized thing. Then it went to digital banking. So there came a term we call ledgers. Okay, there was one software that used to be used for tally. Which were like we used to
balance sheets and ledgers. So ledgers is basically like, and you have seen, Jay, you made a transaction in Google Pay UPI. You can't delete that transaction. It will be there in your passbook always. You can't delete it. So it's basically it is stored in a database, but we have manually enforced the immutability. Blockchain is naturally immutable. And then came crypto, programmable money. The first thing that came is blockchain, Bitcoin, that is digital gold. So what happened is like digital gold, scarcity was built. Basically, there are mints that actually uh, mint money, right? But blockchain, once it has been minted, let's say it has like 21 million bitcoins were actually minted, and no further bitcoin was minted. You understand this? So what happens is, right? Let's say you understand this, Jay, when asset becomes scarce, its value increases, right? So you have heard this term called mining, Bitcoin mining. So what happens is like miners mine Bitcoin at first. The price of Bitcoin was low. Once Bitcoin was getting mined, the price went high. I mean, you need to have a bit of trading market. When Bitcoin becomes scarce, its price went up. So Indian rupee can be minted, right? But Bitcoin was not up. Was it was designed in such a way it was not able to be minted. Uh, what is a smart contract? Okay, let's go to Ethereum first. Okay, Ethereum. Ethereum is also called world computer. Uh, for Bitcoin, the entire ethos of it was that it was a cryptocurrency. The blockchain didn't have any other specific use case. But with Ethereum, we have a coin as well as a framework that allows you to actually publish code on the blockchain. So that's what it claims. Like it's money, but it's programmable. That's what it said, Jay. And then it came the idea of decentralized application and DeFi and NFTs, like banks without bankers, and there are much more terms and other things I'll explain. Okay, so and then came Solana. Solana is just like Ethereum. Acha, okay. Solana is just like Ethereum, okay, but it's different. How different it is faster than Ethereum and it has parallelism. You understand, like, तुम लोगों को, you guys are from first, second years, right? First year. Okay. So what happens? Threading comes like CPU में threading होता है. So basically there is like not I won't go into threading. I'll say this. The processes can be executed in a parallel in a single stream way. Let's say like I get 10 tasks. I do task 1, 2, 3, 4, 5 in a sequential way. But with Solana, tasks can be done in a parallel. It's like I can do task 1 and 7 at one time and then 5, 6, 9 at another time. So what happens is like the transaction TPS becomes shorter and the smart contracts programs is going to be like executed much faster. Yeah, so that is basically the difference, the comparison. So Bitcoin was like 7 TPS, Ethereum was 15, and Solana is like 65,000. That is a very, very big jump. And that is why there is such a big hype of Solana, and there are so many new DeFi and uh, consumer market about crypto and everything. So bank, I mean, there is one thing. What is decentralization? Someone said, like, you guys know the term called decentralization. You guys have any idea what decentralization is? Like there is no central authority, like our government, right? Not Hitler, our government.
For bank, if let's say the server dies, we all die. You have money, or your, let's say, in SBI you have your UPI and everything. The server dies, the document, the details are out, you're sold. But with blockchain, like, thousands of computers and nodes agree on the truth. So what I mean by this, that is called a what I say by this is called a consensus mechanism. You know what consensus is, right? Consensus. You know what consent is? You say yes to something, that is what consent. Consensus is plural of it, right? What consensus mechanism is? Let's say everyone here is a blockchain node. I am a new node. I have programmed myself. I want to enter the blockchain. If every one of you guys doesn't say yes, I can't enter into the network. Much like a UN veto. If some country does veto it, the bill is not getting passed. So basically, it's just like that. That's called a consensus mechanism. Bitcoin had a consensus mechanism. Ethereum had a consensus mechanism, and Solana has a consensus mechanism. But these three are different. Ah, okay. I have used an analogy of Google Doc. For in a Web 2 world, I'll send, let's say in Microsoft Word, I'll send you a file. Now there are two copies of it. The truth is inconsistent. You come to me and show it to the professor that this is what I have done for the project. And I come and I show the same document and I say this is what I have done for the project. There might be some difference in it. Let's say the name is changed but the heading is changed. So the source of truth is one, but there are two copies of it. So there is a disparity between the truthfulness of the asset. Do you understand this? Do you understand this? Do you understand the disparity? No. Okay. So uh, people have projects in GitHub, right? People have projects. I took Piush's project, cloned it, and showed it in my resume as if I have made it. The recruiter comes and sees it. Is there any thing that will say that I have actually, it's like it's my brainchild or Piush's brainchild? Can anything decide it? No. That's what I was telling. For Web3, we are looking at the same file. If I like to see it instantly, it's like live change. Figma mein hota hai na? It's like somebody's changing it, you can see it directly. It's happening in the same file. And it's a shared truth. It's like if Piush changes his code, I can see it because it is in the same repository. That's a different, it's like an analogy I have used. Are you guys confused? Are you guys confused? No, can I see? Are you guys confused with this analogy? No, right? Okay, you guys know what a ledger is. It's basically a proof of transaction that I send it to this bank account to this bank account. That's what a ledger is. That's that. Okay, protocol. Protocol is basically like everybody has done HTTP website. That's a kind of protocol. I won't go into inside. It's a very thing. Blockchain is just a protocol for value. Okay. Yes. What is a block? A block is a container for data. Blocks that hold transactions. When we seal it, we hash it and change it to the next one. Uh, okay, I'll just directly show you the simulation. What the hell? Second, my net is gone. I've just on the ledger. Connected to us.
Hey, visual Piush, blockchain visual demo তে ওই যে মেইন ওয়েবসাইটটা খুলছিল এটা একটা কাজ কর, অন্য কোনো জানিস কিছু আছে? জানিস না? আরে কি অ্যান্ড্রু বলে নাম ছিল। ওটা খুলছে না, ওটাই রেখেছিলাম। আচ্ছা, let's go to the uh, I'll show you the demo of how a blockchain works. Let's go to the most important thing in blockchain, that is hashing. My, as I say, you guys come forward. I mean, record this guys can't hear. बोला खाना. Ano pala? Sila actually Google. Oh, yeah. Most important thing which I say is called hashing. Hashing is basically digital fingerprint. How hashing is done, there are different kind of algorithms for it. So it's basically it just transcodes and input data into an equivalent hash. It is for authentication. What happens is like, do you guys have idea about public and private key? Okay, now I can tell you. The thing is, you have heard about encryption. So there is always a word decryption with it. Meaning, let's say I take this, I encrypt it into something. That also means that from that string that has it has been encrypted, I can decrypt it back to this. Right? But that's where it differs from hashing. For hashing, when you hash it, you cannot take this back to here. That's how it makes it safe and secure. So let's say this is what the hash. This is what the hash is there in the compute. Okay. You might be asking, if I can't decrypt this hash, then how will I let's say, okay, so basically not like you are tasked with writing this. Okay, the data is stored here in your computer like this as hashed. You need, when you write this, how will the computer understand that hello world data is right here? The one thing, it's like somebody says hello in WhatsApp to you. Okay, hello encrypts, becomes some string, goes into your friend's phone as the string. The string then decrypts and shows hello. Right? But now the thing is, this is hello world. It encrypts into this hash, but you can't break this hash. So what happens is like, let's say this is a node. This has hashed this into this. Right? I'm talking about consensus, meaning this node has computed some value to come to hello world. This node will also compute some value to come to hello world. Right? This node has computed it. This is the hash. This node has computed hello. Let's say hello world, the D is not there. Or I think the D is not there. This node is computed to some other hash. Right? But are the two hashes similar? No.
added. Again, no two hashes will be the same. It depends on the hashing algorithm. The hashing algorithm is very advanced. I also don't know how it's being done. Like here it is used SHA-256. The hashing algorithm used here is SHA-256. For Solana, I think it is ED12 something, 25519. ED25519 curve. It's something different. So, do you understand hashing? I am going into the technical parts of blockchain. You understand hashing? This is the one important thing. Why hashing is used? Because each block should have a very unique identification. So, what the hashing algorithm? Hashing algorithm is already there. It's like the encryption. It is already being done in the blockchain. It's like the block. When you actually write code in blockchain, it always like gets. It's basically like wrapping a packet. It gets wrapped in a hashing algorithm. It gets hashed. Huh? अच्छा, अच्छा, okay. अच्छा, कल चलते हैं। Anders Burger. It's Anders Burger. Cool. The size not what? अरे बीटा वाले नुकी सी कत कर जिन्होंने टैप मेरे को तो आपको सुन नहीं आ रहा है क्या? खुल नहीं ये साइड नहीं हो रहा साइड नहीं हो रहा कनेक्ट करेगा कनेक्ट हो चला तो एखान থেকে চলে গেল চলে গেল आदर्श कनेक्ट कर चुकी
SH256 hash. That one. You guys can see, right? This is SH. Even for no value, there is a hash. Like whatever value you say, the hash always changes. So there is no chance you can have a same hash with the different values. So that's how you understand that the data which is there in a blockchain is unique. First thing, this is like live for a block. Think of it as blockchain ka block. Okay. Uh, Blockchains are like different kinds of nodes connected, right? So the first block that was ever made is called a Genesis block. That's why there is block number one. Nonce is what? How do you nonce की बात होती है? Like or random seed value, seed. हाँ, exactly. So nonce so nonce is basically a random value. So you guys, अच्छा, sorry. So let's say you're going to store a password in a database, or there is always a norm to hash the password stored in the database. Okay. To add extra layer of security, we use something called salting. What salt does is like to put a random amount of string, use it to hash it, so the data becomes ambiguous. Okay, so basically it's like somebody asks your phone number, you added 15 different numbers in your phone number, so it becomes untraceable to the fact that the phone number is there. Only the way you encrypt the number can understand how to decrypt it, but no third party can understand that. Okay, so that is what a nonce is. So nonce randomizes hash. Okay, so अच्छा, repeat किसको करना है? अच्छा, salting basically means that you have a phone number. Okay, you want to encrypt that phone number. Like you want to send it to another person, but you want it. You want to send it in a private network, but you want it to be encrypted. Okay, what salting means, you have a 10-digit phone number. You added like let's say 20 different numbers to it, 20 different digits to it to make it randomized, so that the person who is seeing on a private network doesn't can't make sense what your actual number is. So that's what happens in the nonce. It just acts as a salt to throw you off the actual hash of the data. So, so how a hash, you see, if I change, let's say I change the k, the hash changed again. Then what it means, how a hash is generated. It takes the block number, it takes the nonce, it takes data, then it takes hash. So for someone to break into a blockchain, you need to understand, you have to break the block number, you have to break the nonce, you have to break the entire data of it. The high likely of all of that being similar is very hard. And that too we are hashing it. That's why blockchains are impervious. Exactly. Yes, you can give non-stable level hash in non-stable hash in. But there is one thing I wanted to say. Notice how there are three zeros at the first. Okay.
हाँ, so basically like वो लोग तो वो like they tend to match this hash by randomizing nonce. That's what Bitcoin used to do. Like what Bitcoin mining meant, you heard the fact that miners had this big computers that used to calculate something. That's why it's like it was very harmful to the environment for the amount of energy it consumed. So that used to be called proof of work. That proof of work meaning, so the person who was mining it, his whole idea is to go through all of the possible combinations to get the exact same hash. Hello world, hello world has a hash. I have to find the hash. So I have to find the hash. How will I do it? I have to start with A, B, C, D, E, F. I have to find all of the permutations and combinations of all of the letters I have. So once I reach hello world, the hash will match. But I'm starting from A, B, C, D, right? I'm starting from A, B, C, D. So then it will become A, B, A, C. So I have to compute all of that. That's what used to happen in Bitcoin. People used to go through all of the combinations. People used to run all those brute force method in DSA. Basically, brute force method in DSA used to run all of the mathematical formulas and everything just for the sole reason to match it. When people match, get bought blockchain. Sorry, Bitcoin in the world. Bitcoin. So basically, this doesn't mean that blockchain is crackable. No, I am going since Bitcoin had a limited amount of supply, it had a very easier hashing algorithm, and it didn't its proof of work is to be so simple that people can actually like go spend millions of dollars to actually go through all of the mine and go through all of the computation and combinations to actually find the hash. But this changed with Ethereum. What Ethereum did was more hard. They implemented a new hashing algorithm which was harder to crack. Second, this is a blockchain. So the number one block is called Genesis block. I said it. So in a blockchain for Ethereum kind of things, it took block, it took nonce, it took data as well as the previous hash and its current hash. Since this is Genesis block, the previous hash is non-existent, so it's zero. Let's say I put a data inside, it's one. See the hash change, not here but in all of them. So let's say you are here, you want to crack the hash of this one. It's very hard to do it. Why? You have to deal with two different hashes. You have to deal with the data, you have to deal with the nonce, and you have to deal with the block. So what is happening? We are putting in much more data to while containerizing the block. So it becomes harder to crack. And again, it has a different hashing algorithm. So you understand that if I put one here and then two here, this doesn't change, but this hash changes. For a matter of fact, those hashes changes. After like 3, 4, 5, those hashes changes. What it means, meaning, another thing we'll understand that how blockchains are immutable. Once you made the blockchain, if you this is the Genesis block, this is the head
head of the tree. You understand this is the head of a tree. Okay. If you take this entire blockchain falls apart. You change the data, you add to it. All the hashes change. The blockchain breaks. That's how you understand that you can't change the data of a blockchain. This block is dependent on this, three is dependent on two, this and the chain continues. You can't change a block that is already added in the network. That's how this live demo, if it actually happens in the block. Okay, back to this. Okay, till this, any doubts? Is it eating your brain? Any doubts? It's a very hard thing. It's very hard thing. It's a very new thing. I know your brain is getting bombarded with new things. It's very hard. Anything you want to ask? Want to clarify? Want me to go through again? बिल्कुल माइंड की करत होतं माइंड की करत होतं राईट आणि डिवाइस येते जेव्हा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन याच्यातून पूर्ण मोदी झाले कोण पण बेसिक नाले मी बोली जे आम्ही तुला बोलत दिला जे आम्ही let's say something called Piush. I'm sorry. Piush नामটা আমি চলো encrypt করলাম কিভাবে চলো হ্যাঁ আমি শিফট করে দিয়েছি say সেটা আমি তোমাকে কথা দিয়ে গেল অ্যালফাবেট শিফট করে দেখিয়ে দেবো দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা হবে বলছো আচ্ছা হচ্ছে নেম পিউষ PIUS পিউষ ঠিক আছে আমি এটা এনক্রিপ্ট করতে চাই ঠিক আছে আমার কাছে আছে চলো let's say আমাকে এবিসিডি লিখতে হবে এখন ABCD অ্যালফাবেট 26টা পিউষের নাম এনক্রিপ্ট করবো ঠিক আছে পি এখানে আছে আমি বললাম আমি সিএস সাইফার ইউজ করছি সিএস সাইফার মানে হচ্ছিল অ্যালফাবেট শিফট করে তবে এনক্রিপ্ট করছি ওর নামে এনক্রিপ্ট করছি এইভাবে RI KU দুই তিন তিন নিচে W X Y URE আমি এইভাবে এনক্রিপ্ট করে তোকে দিয়ে দিচ্ছি তুই জানিস আমি সিএস সাইফার ইউজ করছি কত শিফট নিয়েছি আগে নিয়েছি কি পরে নিয়েছি কিছু জানিস তুই ব্রুট ফোর্স মেথড ইউজ করবি এবিসিডি লিখে দিবি ঠিক আছে তুই সবভাবে সলভ করার চেষ্টা করবি যাতে এই নামটা তুই পাস you have to go through a whole lot of permutation and combinations to get to this ঠিক আছে so that is what happens blockchain data is hashed all the permutations and mathematical equations computer run করছে যাতে হ্যাশটা সিমিলার হয় বুঝলি all permutations and combinations করে আমি আছি all permutations and combinations করে যাতে হ্যাশটা সিমিলার হয় বুঝলি
अरे पाइथन में रैंडम सीट कॉल है उसी था हाँ अच्छा आर की सजेस्ट कर आर की सजेस्ट कर anything you want to know or is it clarified it's clarified अच्छा this is an interesting thing your wallet is empty अच्छा public and private key public and private key তোরা নিশ্চয়ই সিনেমা দেখিস সিনেমা দেখেছিস তো স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখেছিস ভাই স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখেছিস তো রাশিয়ার ওখানে নাকি দুটো কি ইউজ করেছিল না চালানোর জন্য বুঝলি রাশিয়ার ওখানে রাশিয়াতে যখন রাশিয়া হ্যাঁ মানে সিজন থ্রিতে যখন সেলফ এক্সট্রাক্ট করছিল দুটো কি ইউজ করছিল জানিস স্ট্রেঞ্জার থিংস হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা একটা রাশিয়া ছিল ওরা রাশিয়ানরা ছিল না স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখেছিস কি দেখিস না তাহলে বাদ দে for any nuclear operation, you always need to use two keys uh, to actually authorize it. বুঝলি? You need to use two keys. That is the norm of it. সিনেমা দেখতেও পারিস না অনেক পারিস ঠিক আছে so what happens is like public key and a private key there are two kinds of different keys okay. Public মানে keyটা সবার কাছে আছে private মানে keyটা শুধু তোর কাছে আছে ঠিক আছে public and private key আমি কিন্তু করে আদার্স বোঝাবো আদার্স কিছু বলুক so it is public private you know about the you got to know about hashing now like you have like certain data you pass it like you pass it through hashing and it gets converted into some sort of fixed string okay but of course you will be later using it so somehow it will be getting decrypted okay so how blockchain works is whenever you try to create something or whenever you try to create something okay a block or something so you sign a transaction okay now signing a transaction requires a person who's a signer okay now signer needs to have a private key now what is private key helps you to oh I can say in simpler terms सिंपल में क्या समझाऊं मैं हाँ प्राइवेट की क्या होगा सिंपल वे में अचानक से दे दिया मैं वहाँ पे मजे कर रहा था मैं सारी क्लास को 7 बजे खोला देखा टाइम ही नहीं मिला मेरे को प्राइवेट क्या बताऊँ इजी में क्या बताऊँ
encryption समझाना. Okay, so whenever you encrypt something, you need two things. One is one is a private key, one is a public key. Public key you can share. Like how wallet works is, whenever you create a wallet in Phantom, say MetaMask or like there are like many wallets. So you create a like wallet, you get a seed phrase. Okay. Now you have to like protect that seed phrase, and that is how you will be able to load your accounts. Like you load your wallet at anywhere. Okay. Now, what is the private key? A private key is uses to for like signing and all. क्या ये पीयूष पीयूष हैंडल कर ले नहीं आ रहा है मेरे को प्राइवेट की अच्छा, तुम लोगों को कभी किसी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है? क्लाउड क्लाउड पे काम किया हो कभी कभी? थोड़ा बहुत लाइक किसी वेब सर्वर पे हम लोग लॉगिन कैसे करते हैं? एसएसएच थ्रू. सो वी गॉट अ आरएससी की, राइट? We use a algorithm to encrypt our keys, which is called RSA, right? So we have a public key which is stored on the virtual machine itself, right? And the private key is stored on our personal computer. We don't, and even if you use AWS or DCP, they always say that don't share your private key with anyone. If someone got hold of your private key or private RSA key, anyone can access into your virtual machine, right? सो द सेम थिंग गोज फॉर एन्क्रिप्शन, दैट इज एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम. ठीक है, तो अभी इधर तुम्हारा वॉलेट भी सेम तरीके से एन्क्रिप्ट होगा. ठीक है, नाउ व्हेन योर वॉलेट इज एम्प्टी, लाइक योर वॉलेट हैज नो बैलेंस, द वॉलेट will and must have two things. One is your public key and one is your private key. Okay, so the public key is shared with everyone and private key is stored on your personal computer. Okay, ज्यादा टाइम क्या होता है, लाइक मैं वॉलेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेटामास्क या फिर फैंटम फैंटम ना सोलाना. तो मेटामास्क एंड फैंटम में क्या होता है, दो तुम्हारा पब्लिक की होता है एंड प्राइवेट की होता है. अभी नाउ यू गॉट अ सीड फ्रेज. सीड फ्रेज शायद से 24 वर्ड्स का होता है. 24 वर्ड्स का सीड फ्रेज होता है. वो 24 वर्ड रैंडम होता है. ठीक है, कैट, डॉग, कुछ भी, मसाला, कुछ भी. ठीक है, विमल, कुछ भी 24 वर्ड रहता है. उससे कुछ एल्गोरिथम लाइक कैसे की बनता है उसका एल्गोरिथम मैं भूल गया. ठीक है, बट उसी फ्रेज से तुम्हारा सबसे पहले तो प्राइवेट की बनता है, देन उस प्राइवेट की से डिराइव करके पब्लिक की बनता है. ठीक है, नाउ उल्टा नहीं हो सकता है. पब्लिक की से कोई प्राइवेट की नहीं बना सकता, सिर्फ प्राइवेट की से पब्लिक की बना सकता है एंड सी फ्रेज से तुम्हारा प्राइवेट की बन सकता है. सो जब भी तुम फैंटम पे वॉलेट बनाते हो, तुम्हें फैंटम बोलता है कि डोंट शेयर और डोंट लूज योर सीड फ्रेज. Even if you change your laptop, if you have your seed phrase with you, then you can get your old account in your new laptop as well. ठीक है, जो कि एक्चुअली अगर तुम लोग सोचो हैशिंग एंड एन्क्रिप्शन पे, वो पॉसिबल नहीं होता है. बट इफ यू हैव योर सीड फ्रेज, देन इट्स पॉसिबल. सो नाउ द थिंग इज, सोचो कि मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ. ठीक है, बट मैं पब्लिक इंटरनेट के थ्रू बात कर रहा हूँ. ठीक है, एंड सेम वाईफाई पे सोचो कि ये कैफे है. ठीक है, बट दोनों कॉर्नर पे है. ठीक है, एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड है. अभी तुम लोग भी सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हो, राइट? सो आई सेंड हर अ मैसेज, हाय हाउ आर यू. इफ द मैसेज इज नॉट एन्क्रिप्टेड, जस्ट लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स, if it's not encrypted, then you guys would be able to read it. You can use a software called Wireshark, right? Packet read for software Wireshark. You can use Wireshark to read the packets, internet packets. ठीक है, कोई भी read करके कोई भी समझ सकता है मैं उसको क्या बोलना चाहता हूँ. ठीक है, सोचिए मैं न्यूक्लियर कोड भेज रहा हूँ. ठीक है, मैं ट्रम्प को कोई न्यूक्लियर कोड भेज रहा हूँ, कोई भी किसी ने पढ़ लिया, बस खत्म, डन. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है. मैं जब अपना मैसेज जब मेरे लैपटॉप से निकलेगा, तब उसको मैं एनक्रिप्ट करूंगा. इसके साथ मैं अपने प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करूंगा. अपना पब्लिक की मैं किसी भी की एक्सचेंज एल्गोरिथम, जैसे कि डीपी एलएन हो गया. डीपी एलएन एक एल्गोरिथम का नाम है जिससे कि हम लोग एक दूसरे के साथ पब्लिक इंटरनेट के थ्रू अपना पब्लिक की शेयर कर सकें. डीपी एलएन के थ्रू मैंने सबसे पहले पब्लिक की उसके साथ शेयर कर लिया, उसको मेरा पब्लिक की मिल गया, बट मेरा प्राइवेट की मेरे पास है. मैंने मैसेज भेजा प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके, उसके पास पब्लिक की है. तो तुम लोग क्या दिखेगा, मैंने सोचो उसको लिखा हाय हेलो, ठीक है, हाउ आर यू. तुम लोग क्या लिखा, एबीसी समथिंग, बहुत कुछ, हाँ बस जिब्रिश एक स्ट्रिंग दिखेगा, तुम लोग कुछ पता नहीं चलेगा. एंड यू डोंट इवन नो कि कौन से एल्गोरिथम मैंने ठीक है. तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं आज से एनक्रिप्ट
है, ठीक है, जो कि करेंटली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है, उसको अभी ब्रेक नहीं कर सकते, इवन क्वांटम कंप्यूटर कांट ब्रेक इट राइट नाउ, ठीक है, अभी भी 10 साल 15 साल लगेगा, ठीक है, एंड देन शी कैन डिक्टेट इट विद माय पब्लिक की, ठीक है, वो पढ़ सकती है मेरे पब्लिक की के साथ, ठीक है, अभी जब उसको फिर से मेरे पास भेजना होगा, वो पब्लिक की से फिर से एन्क्रिप्ट कर सकती है, मैं प्राइवेट की से डिक्टेट कर सकता हूँ, ठीक है, सो ओनली we are able to read it, ठीक है, सेम थिंग हैपेंस विद योर वॉलेट, ठीक है, तुम्हारे वॉलेट पे जो भी तुम्हारे एनएफटीज होते हैं, जो कि पवन भाई ने बताया कि हाई क्वालिटी कुछ जेपीजी पीएनजी बताया ना आपने, एनएफटीज वगैरह है, तुम्हारे कॉइन्स वगैरह हो गए, अलग अलग ब्लॉकचेन के अलग अलग करेंसीज होते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे वॉलेट पे आएगा तो तुम्हारे पास ही एक्सेस होगा, अगर हाँ तुमने कुछ कभी भी अपना सीड बेस कागज पे लिख के रखा है, ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, लाइक ब्लॉकचेन में अगर तुम कभी वॉलेट करो, कभी ट्रेडिंग करो, स्टेकिंग करो या फिर डेवलपर ही हो तुम, ठीक है, अपना वॉलेट का सीड बेस ऑलवेज हार्डवेयर कहीं पे स्टोर करना चाहिए, ठीक है, कभी भी स्टोर नोट पैड में, प्लीज नोट पैड में मत ही स्टोर करो, विंडोज पे और भी मत स्टोर करो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को अगर वो कागज दे दिया दोस्त हो जाएगी, साला ये तो 24 का वर्ड है, इसका मतलब किसी तो वॉलेट किसी ना किसी वॉलेट पे लगेगा, उसने ट्राई किया फैंटम पे नहीं लगा, एटमास पे लग गया, बस वॉलेट मिल गया उसको, तुम्हारा कॉइन पूरा अपने वॉलेट पे रहेगा बेचारा, ठीक है, और तुम लोग बैठे रहोगे, तो दीज आर द, कैसे बताऊं, ये हो गया तुम्हारा पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ठीक है, एरपॉट एरपॉट क्या है, अभी तो छिला भी देखा है, एनएफटी को अच्छी ना, एनएफटी बहुत है, एनएफटी को अच्छा पॉली एनएफटी है, तुम ओके, सो अभी एआई का जमाना चल रहा है, ठीक है, सब लोग एआई से इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आर्ट्स वगैरह डिजिटल आर्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तुम लोग गलत गलत आर्ट्स भी बनते हैं बट अच्छे आर्ट्स भी बन रहे हैं, राइट, तो सोचो कि तुमने एक मस्त पिक्चर जनरेट किया एआई से, ठीक है, किसी भी मॉडल से जनरेट किया, ठीक है, डू यू हैव अ वे टू लाइसेंस इट अंडर योर नेम, इट्स डिजिटल, राइट, तुम कभी भी कहीं पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर, देखो मैंने किया है, सबसे ज्यादा तो फेसबुक नहीं, लिंक्डइन, यो कनेक्शंस आई हैव मेड दिस, ठीक है, लिंक्डइन, डू यू हैव एनी वे टू सिक्योर दैट इट्स योर, कोई भी स्क्रीनशॉट लेगा या फिर किसी को भी अगर बेसिक वेब डेव 101 आता है तो राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, डेव टूल से डाउनलोड कर लेगा, किसी को भी अगर आता है तो, सो डू यू हैव अ वे टू डिफाइन द ओनरशिप ऑफ योर डेटा एक्चुअली, ब्लॉकचेन पे अभी तक संदन भैया ने जो बताया, व्हाट आर यू ओनिंग, लाइक व्हाट इज योर ओनरशिप, योर cryptocurrencies, your transactions, you own those, right, till now you owned that, but you still don't have a way to own digital assets, ठीक है, like those are digital assets also currencies, but actual like PNGs, JPGs, you don't own them, right, so what do, so I guess ERC 721 coins का था या फिर कौन सा NFT तो कौन सा था ERC, तो whatever, इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम जब आया था, इथेरियम तो ERC ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज होता है, इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर चेंज होता है, ERC का फुल फॉर्म शायद, ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइक कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं इथेरियम नेटवर्क पे कि हमें ये चाहिए, एक प्रपोजल डाला जाता है वहाँ पे, ठीक है, जैसे नॉर्मल कैसे बताऊँ, इंटरनेट के प्रपोजल्स होते हैं, लाइक ये प्रोटोकॉल बनाओ, ठीक है, ऐसे बना हुआ है 90s के टाइम पे, वैसे ERC होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ERC 721 was made to build something like to have ownership of your digital assets, that was called NFTs, non-fungible tokens, till now NFTs से पहले तुम्हारे पास क्या थे, currencies थे, those are tokens as well, but those are fungible tokens, मतलब तुम एक दूसरे को ट्रांसफर तो कर ही सकते हो, उसके बाद लाइक कैसे बताऊं, यू कैन हैव देम, उसका एड्रेस लाइक तुम्हारा हर एक टोकन का एक एड्रेस होता है, ठीक है, अगर तुम अपने पास रख दो, ठीक है, किसी कहीं पे लिख के तो फंजिबल हो गया, बट डिजिटल एसेट्स आर नॉन फंजिबल, ठीक है, तुम एक बार तुमने ले लिया ना तो रिफंड नहीं कर सकते,
एग्जैक्टली नॉन फंजिबल का एग्जैक्ट मीनिंग वही होता है, मिंट नहीं होता है वो, ठीक है। एक बार किसी ने एक एनएफटी क्रिएट कर लिया, सेम थिंग कोई रीमेक नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक एनएफटी अलग अलग होता है, हर एक एनएफटी का सिग्नेचर अलग होता है, ठीक है। डिजिटल उसका सिग्नेचर ही अलग होता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अपना मस्त एकदम एआई का आर्ट एक एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, उसका मुझे एड्रेस मिला, उसका ओनरशिप मेरे पास आ गया, ठीक है। नाउ आई कैन सेल दैट, ठीक है। किसी को मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, यू गिव मी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे साइट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलरेडी रिटन, कोई मुझे इतना देगा, इतना टोकन मुझे देगा, उसके बदले में मैं उसको एमटी चला जाएगा मेरे अकाउंट से, ऑटोमेटेड होता है, कोई किसी को वहाँ पे स्कैम नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई किसी को नहीं स्कैम कर सकता है। तो सोचो मैंने उसको उसका प्राइस रखा 5 ETH, जो कि इथेरियम का करेंसी होता है, ETH, ठीक है। बिटकॉइन का करेंसी बिटकॉइन ही है, सेम नेम है, बट इथेरियम का है ETH, सोलाना का है सोल, ठीक है। तो मैंने उसका प्राइस रखा 5 ETH, ठीक है। तो अगर कोई मेरे अकाउंट पे 5 ETH भेजेगा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, देन मेरे अकाउंट से एनएफटी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा? हर एक एनएफटी के अंदर जैसे कि उसका एड्रेस रहता है, वैसे ही उसका ओनर का वॉलेट का एड्रेस रहता है, ठीक है। एक चीज समझो, ब्लॉकचेन की दुनिया में तुम्हारे इंडिया पे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, हजार तरह का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। पीछे शायद ऐसा कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बहुत तरह का आइडेंटिफिकेशन है। ब्लॉकचेन की दुनिया में योर ओनली आइडेंटिफिकेशन इज योर वॉलेट, मोर स्पेसिफिकली द कीज योर वॉलेट आर कैरिंग, ठीक है। तो जब भी तुम एनएफटी क्रिएट करते हो, ठीक है, उसका ओनर तुम्हारा वॉलेट का की होता है, ओनर के वहां पे फील्ड पे, ठीक है। सो एनएफटीज हो गए वो। अभी नाउ एनएफटीज आर लाइक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था 2 साल पहले, 2021-22 बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, ठीक है। और डिजिटल एक मंकी का आर्ट होता था ना, सेम मंकी हजार हजार रुपया का बिकता था, ठीक है, बहुत लोगों का बिकता था, अभी भी बिकता है भाई। वही हो गया ना यार, 2 साल पहले बहुत दिक्कत, बहुत खरीदे हुए लोग, ठीक है। तो वही हो गया एनएफटीज एंड एनीथिंग एल्स। ओके, सो रैप अप तुम ही करो, तुम ही स्टार्ट करो, रैप अप तुम ही करो। And that is really someone's blockchain is really funny. So we have a little quiz from our end about what do I have more to teach? Public, private, done. Transaction ऐसे क्यों करो? Direct. Okay. So Adarsh, quiz, all yours.
बोलो बोलो।
क्या trouble उसमें? ओ, तुमने तो ये पोल जैसे डाल दिया, पोल जैसे। नाइस, COC fan. Why do people say blockchain data is hard to change? Because it is illegal to edit it. भाई तो भी भाई ये ऑप्शन किसने डाला है भाई? एक्चुअली हाँ सच है, हाँ सच है, तुमको सच सकती है। अरे तूने बोला ना कोई सुन के सच सच में सोच लिया, हाँ वही होगा। शशांक कौन? नाइस, वीडियो नाइस। हर हर एक पे ना डी वाला ऑप्शन मस्त मस्त आ रहा है, ठीक है हाँ भाई, एडवर्टाइज भाई, नाइस। नाइस, व्हाट डज नोट मीन? हाँ फिर से देख देख डी वाला, देख देख फिर से डी वाला ऑप्शन देख। कौन जीता इस बार? लेट्स सी। वाह, कौन दिया था ये, कौन दिया था? प्लीज, सुपर से नाइस। 26 सेकंड जो देगा, हाँ लक लक। अरे नोबी ऐसा करो ना, पेंसिल पेंसिल पे लिख के पेंसिल ऐसा रोल कर दो। और हाँ ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा डी पे वो बैड लगे ना, तो यही लकी होगा। लेट्स सी, अगर डी नहीं हुआ पसंद है वो, पसंद है ट्रीट देंगे। अच्छा लेट्स सी असली वाला कौन सा है। ओह मैंने क्या बोला है, पसंद है ट्रीट दो। वेदांत, नाइस। ये दिए ऑप्शन को तो आलादा है। very nice. So that's why like Satoshi like tried to like introduce Bitcoin. भाई Everyone gets free tokens. कौन भाई, किसको चाहिए, कौन दिया? नाइस, एयर ड्रॉप सोलर में हमें रोज दुई दुई पर कुछ रखे थी पब्लिक। हाँ जिसके लिए 3 लोग मारामारी करने लगे कि कौन समझाएगा, ये कौन बोलेगा। Actually, private key can be shared. Public key must be secret because that's how you know like people will know you. अरे कौन दिया ये, कौन दिया भाई, मैं चीख चीख के समझाया भाई, कौन दिया वो? शर्म शर्म आती है, कुछ भी शर्म नाम की कोई चीज है अंदर। नाइस, What is the wallet in crypto mostly used for? Yeah, increasing internet speed. That's true. भाई ये वाला ऑप्शन नहीं आता बार बार यार। अबे यार नाइस, ये
दे रहा है ये? सच बता कि कौन दे रहा है ये? कोई एक ही बंदा है, 6% आ रहा है, मतलब कोई एक ही बंदा है, हमारा एक ही बंदा दे रहा है ये। वेदांत, नाइस। हाँ, सुन में थोड़ा थोड़ा बताया। टाइप ऑफ ब्लॉकिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर भी ठीक है, इस बार तो बी वाला, इस बार बी वाला था सब वो है। ये थोड़ा टफ है क्योंकि अगर टीचर समझा। ओके ओके ओके, इस बार तो वो 6% वाला बंदा भी इधर आ गया। वेदांत, नाइस। रिप्लेसिंग एंटायर इंटरनेट, वाह वाह, ये तो टर्मिनेटर बन गया है, टर्मिनेटर जेनेसिस। व्हाट द हेक, बी, अच्छा हाँ, हो भी सकता है भी शायद से। ये यही दे रहा है, यही दे रहा है, यही दे रहा है, यही दे रहा है, इस बार तो इसमें भी कोई दिया ऑटोमेटिकली हो गई। अरे भाई कुछ तो चेंज तो हो भाई, अभी चेंज हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, ना उसको भी लगे। हाँ, काफी पूरा ही लगे। लक लक लक, चलो लेट्स सी, फिर से 6% वहां पे अकेला है। एक बंदा कहीं, हर बार एक ही बंदा कहीं ना कहीं अकेला होता है। पेंगुइन पेंगुइन पेंगुइन, हाँ अकेला पेंगुइन बनता है, सुपर से लाया हुआ है। सबका किसी का, सब, हाँ सबका एक एक गलत हुआ है। अबे नीडिंग printers to work, अरे यार ये गलत है, सबको पता है कौन सा असली है, इससे सबको पता लग गया कौन सा असली है। हाँ, ये जानबूझ के कर रहे हैं, इस बार तो 6% से 11% हो गया, दो दो कर रहे हैं। सुपर से ऊपर आ गया, फिर से एक लकी क्वेश्चन आ सकता है, अगर वेदांत उस पे दिया तो वेदांत ऊपर आएगा। सेकंड बी ऑप्शन रखो, ताहले ब्लॉकचेन पहुंच, ठीक है ना भाई, मत ही बोल उस बैंक का नाम यार, इतना चूतिया बैंक है। फिर से भाई, भाई उसको एक स्टिकर फ्री मिलेगा। मजा चल, हाँ रश, ओके सुपर सेल। हार्डेस्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट क्वेश्चन कौन सा, लकी क्वेश्चन। ओके नाइस, खत्म, और क्या, फुवारा फुट रहा है, चलो खत्म मतलब। हाँ, तेरा क्वेश्चन, नाइस नाइस नाइस, दिया ठीक है, तो मतलब ठीक जाए तो जैसे जो दी। हाँ आ रही वही फर्स्ट, चलो हाँ है आदर्श देव, आदर्श हम यार, तू देगा, तू देगा, बोला था पता है, सुन सुन,
अभी आके इधर बैठा, मैं उसको पूछा कटआउट का, बोल रहे नहीं कटआउट का दुकान बंद था। मैं बोला मैं कल रात को बोलता हम लाते ही नहीं। अभी इसको तू काटेगा कैसे? सुन सुन सुन, इसको काट सकते, इसको काट सकते, इसको कैसे काटेगा?